So all these three examples or instances which we discussed in the first part of this lecture, first part of this topic, uh, all these three examples, all these three instances, they clearly show that there is close relationship between religion and politics. And this, it has been said that these, to reflect, to express these things in politics, it is not wrong. These things are not wrong, or you can say these are not dangerous. ये कोई खतरा नहीं है. ये चीज़ें जो है रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच जो हमने तीन इंस्टेंसेस, तीन एग्जांपल्स पढ़ी, whether that is Gandhiji's view on religion and politics, whether that is human rights groups demand, whether this is the women's movement's demand, these three things show that religion and politics are closely related to each other, and also to express these things is not wrong or dangerous. These things are not wrong or dangerous. And it has been said that ideas and values that guide the politics, these ideas and values which are drawn, which are taken from different religions, these are these can and perhaps play a very important role in politics. Okay, so the ideas, जो ideas different religions से बारो किए गए हैं, जो politics को गाइड करते हैं, ये आइडियाज, ये आइडियल्स, ये वैल्यूज जो हमने बहुत सारे रिलीजन से लिए हैं, ये कर रहे हैं, और ये दे कैन एंड दे शुड, सॉरी हियर इज शुड, they can and they should play perhaps an important role in the politics. ये अभी बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं पॉलिटिक्स में, और निभा भी सकते हैं in the future. So this again speaks the relationship between the politics and religion, or the role of religion in politics or politics in religion. So in politics, people as a member of particular religious community, they should express their demands, interests, and needs. So in politics, the need is that people as members of particular religious community, or for example, if I belong to this Islam, I am the follower of Islam, I am Muslim, what is important in politics
as I am the member of this particular religious community, that is Islam, that is Muslim community, I should express through politics. Politics में ज़रूरी है कि मैं express करूं अपने demands को, अपने needs को और अपने interests को. मेरी demands क्या है, मेरी needs क्या है और मेरे interests क्या है, मैं क्या चाहता हूं. मैं as member of particular religious community, religious group, उनको politics में express करूंगा. वही demand करता है ये politics. And in religion there is discrimination, there is religious discrimination, there is oppression. And to prevent the religious discrimination and oppression, to prevent religious discrimination and oppression, those people who are at the helm of affairs should regulate the practice of politics, or practice of religion. So what does that mean? That means in a religion there is discrimination, there is oppression, and now how can you end this, how can you prevent this oppression? आप कैसे इस religious discrimination को, religious oppression को prevent कर सकते हो, बचा सकते हो? इसके लिए those people who are at the helm of affairs, that means those who control power, politicians, political leaders, bureaucrats, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये जो रिलीजन है, रिलीजन की प्रैक्टिस को वो रेगुलेट करे थ्रू वेरियस लॉज, थ्रू वेरियस रूल्स, वेरियस मेजर्स. वो कोशिश करे कि ये जो रिलीजन है, रिलीजन के इस प्रैक्टिस को वो कोशिश करे रेगुलेट करने की, कंट्रोल करने की. तब जाके जो है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस ओप्रेशन जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं. एंड इट हैज़ बीन सेड दैट these political acts are justified and are not are not wrong, but unless and until these politicians they treat all the religions equally. So these political actors, that is the actors of the political leaders, bureaucrats, politicians who are at the helm of affairs, their political acts can be justified. These are justified and these are not considered wrong. इनको हम wrong नहीं कह सकते हैं. कब तक? जब तक कि जो है unless and until जो ये जो आप देखोगे वो किसी भी रिलीजन के साथ जो है नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं, हर एक रिलीजन को वो ट्रीट इक्वली कर रहे हैं. तब तक इन पॉलिटिकल एक्ट्स को जस्टिफाई किया जा सकता है. और इनको आप गलत नहीं मानोगे जब तक आप ट्रीट जो है हर एक रिलीजन को इक्वली कर रहे हो. आप हर एक रिलीजन को, मज़हब को कह रहे हो कि हाँ हर एक मज़हब ठीक है, हाँ ये इक्वल है, और आपके पास कोई बायस नहीं है, आप किसी रिलीजियस के आप पे जो है रिलीजन का, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का जो है इन्फ्लुएंस नहीं है, आप रिलीजियस फेवरेटिज्म नहीं कर रहे हो.
तब तक इनको जस्टिफाई किया जा सकता है इन एक्ट्स को कि द पॉइंट इज दैट कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पॉलिटिशियंस शुड act, they should intervene in the affairs of religion in order to they should regulate the religion for the well-being, for the this prevention of the religious discrimination, and these acts are justified. इन acts को आप justify कर सकते हो, इन acts को कोई भी नहीं कह सकता है कि ये गलत है, क्योंकि इससे आप प्रिवेंट कर रहे हो डिस्क्रिमिनेशन ओप्रेशन रिलीजन में। और ये ज़रूरी है कि आप हर एक मज़हब को, ये जो पॉलिटिशियंस है, हर एक मज़हब को वो इक्वली ट्रीट करे कि हर एक मज़हब इक्वल है और उन पे किसी भी मज़हब का इन्फ्लुएंस, खास मज़हब का इन्फ्लुएंस ना रहे, वो कम्युनलिस्ट्स ना रहें, वो हर एक मज़हब को जो है सिक्युलर फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ द सिक्युलरिज्म देखनी चाहिए, वो सिक्युलरिस्टिक आउटलुक उनके पास होना चाहिए, वो हर एक मज़हब को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक रिलीजन and politics, and in the coming lecture we will inshallah discuss the communalism and politics. What is the role of communalism, what is communalism, and how this communalism is playing important role in politics, what is its role in politics. Inshallah we will discuss that in the coming lecture. So this is the second part of the lecture topic, that is the religion and politics. Hope you have understood it well, and thank you.